अरे ऐसे तो लोग, yes, we were doing about the theory of catastrophism, right? देखो आपके एवोल्यूशन का जो सिलेबस है वो बहुत ही कम है, ठीक है, वो भी नहीं है जमशेद आज। तो जो आपके एवोल्यूशन का सिलेबस है वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। तो उसमें सिंपल सी इतनी सारी चीजें हैं कि आपका बेसिक व्हाट इज थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके बाद वील गो टू द एवोल्यूशन ऑफ दैट थ्योरी, जैसे कि इसमें लोग पढ़ेंगे प्री डार्विनिज्म, देन डार्विनिज्म एंड पोस्ट डार्विनिज्म, ठीक है। इसके पहले आपका सीधे सीधे उन्होंने मेंशन कर दिया, इफ यू सी द सिलेबस, इफ यू सी द क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन जो हम लोग यहाँ पे करेंगे वो हम लोग डार्विनिज्म के थ्रू करेंगे, बिकॉज वी नो दैट अच्छा व्हाई the complete time period of that theory of evolution has been divided with respect to the Darwinism. क्यों? ये तो हमने सुना है ना, प्री डार्विनिज्म एंड पोस्ट डार्विनिज्म, राइट? व्हाई इतनी इंपॉर्टेंस डार्विन को क्यों दी गई? सोचो एक मिनट में। सोच लिया गूगल करना है? अच्छा ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द, देखो अगर किसी चीज को इंपॉर्टेंस दी गई है, सो दैट मींस सिंपली आई एम सेइंग दैट प्री डार्विनिज्म, डार्विनिज्म एंड पोस्ट डार्विनिज्म, ठीक है। दैट मींस अगर किसी चीज को इंपॉर्टेंट दी गई है, दैट मींस इन दैट पर्टिकुलर थिंग ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? सो अगर सपोज आपको बिना किसी थ्योरीज की अगर हम लोग बात करें फिर डिस्कस, व्हाट यू थिंक व्हाट इज द मेजर रीजन ऑफ द इवोल्यूशन? जैसे कि लैमार्क हैज सेड दैट यूज एंड डिसीज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। देन ही सेड दैट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। ये दोनों आपके लैमार्क के थ्योरी थे। तो डार्विन ने ऐसा कुछ तो किया होगा जिसके उनको मेन फोकस रखा गया। सो करंटली इफ यू टॉक अबाउट द इवोल्यूशन, व्हाट इज द मेन थ्योरी हु इज एक्चुअली सपोर्टिंग द इवोल्यूशन? लेट हो गया? What is the main theory who is actually supporting the evolution concept? Natural selection? Majorly तो यही है ना, जैसे कि लैमार्क ने दिया that use and disuse of organ, ठीक है, fine. Then he said that inheritance of acquired character. तो ये तो चलो ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा हमने वो नहीं करा that use and disuse of organ maybe, but इसके पहले एक वीजमैन थे, वीजमैन has given the germ plasm theory. सुना है कभी? That वो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं जहां से इसको डिस्कार्ड करा गया था, those characters is only going to transfer or inherit in the next pattern, which is actually something change which creates some kind of change in the germplasm. मतलब अगर आपके 27 क्रोमोसोम में कोई ऐसा चेंज होता है, so that not necessarily transferring, right? That is the sex-linked inheritance or that autosomal inheritance. But if something is going to change into the 23rd, that for sure is going to transfer, ठीक है। तो वीजमैन ने एग्जैक्टली तो नहीं बताया था कि व्हाट इज दैट जर्म प्लाज्म, समथिंग लाइक दैट, क्रोमोसोम को रिलेट नहीं कर पाया था, बट वीजमैन हैज सेड दैट समथिंग इफ चेंज विल अकर इन 23rd, दैट विल चेंज इन द जर्म प्लाज्म, दैट विल गोइंग टू ट्रांसफर। तो यहाँ तो ठीक है, तो हमने जब इस वाली बात को बोला दैट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, दैट मींस अगर इस पे एक्सपेरिमेंट करा था, इसको डिस्कार्ड करने के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा था कि एक माइस की 5 से 6 जनरेशन रखी और उसकी टेल को कट करा उसको एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रखा कि सो दैट टेल विल नॉट गोना बी यूज्ड। फिर भी आफ्टर 7 to 8 जनरेशन द माइस इज कमिंग विद दैट टेल, दैट मींस अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब इन्होंने इसको रिलेट किया कि अगर किसी में उसका यूज नहीं है, सो ग्रेजुअली वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस बात को फिर डिस्कार्ड किया गया। अच्छा ठीक है, कि सपोज एक बॉडी बिल्डर है, उसका फंक्शन ही बॉडी बिल्डिंग है, वो अपनी जो पूरी लाइफ है वो उसी बेसिस पे कर रहा है, रेसलर, ठीक है। तो उसकी बॉडी क्या हो जाती है, उसकी मसल्स बिकम गुड एंड समथिंग लाइक दैट, एंड दीज मसल्स इन दैट बिग मसल्स इज इन द यूज ऑफ दैट आल्सो। सो दैट इज आल्सो द, वी नो द ना मीनिंग ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, है ना, जो आप अपनी लाइफ जर्नी में एक्वायर करते हो
और आप क्यों एक्वायर करो, व्हाई डू यू एक्वायर, बिकॉज यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ यूज ऑफ दैट। सो लामार्क ने बोला कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। तो इसको डिस्कार्ड कर दिया गया कि भाई अगर माइस का हमने एक्वायर्ड कैरेक्टर में उसकी टेल का यूज नहीं है तो उसको टेल नहीं आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी, राइट। इन्होंने भी बोला कि ठीक है। फिर ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट है, तो यहाँ पे लामार्क ने एक चीज तो वो भी फुल्ली जस्टिफाई नहीं करा, तो इसलिए लामार्क वाज नॉट वन ऑफ द मेजर साइंटिस्ट या फिर फिलोसोफर या फिर जो भी आप बोल दो, थिंकर इज नॉट द इवोल्यूशन, ठीक। उसके बाद मल्टीपल छोटे 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 है डार्विन। डार्विन ने सबसे मेजर कॉन्सेप्ट क्या दिया, नेचुरल सिलेक्शन। ही डिडंट गिव द रीजन। अब इन्होंने क्या बोला, पोस्ट लामार्क ने क्या बोला कि जो लिम्स थे उसके स्नेक्स के वो इसलिए गायब हुए हैं, दैट्स ट्रू कि वो गायब हुए हैं, बट वो इसलिए गायब हुए हैं क्योंकि दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, है ना, बट वो प्रूफ नहीं हो पाया। यही बात आके डार्विन ने बोली। डार्विन ने ये नहीं बोला कि क्यों हुए हैं, कब हुए हैं, कैसे हुए हैं, he just gave a philosophy of the natural selection. Something is not in our hand, something is selected by the nature. अब नेचर जो है वो किस बेस पे सेलेक्ट कर रहा है, इसको हमने डिफाइन किया पोस्ट डार्विनिज्म। सो पोस्ट डार्विनिज्म में आपके जो मेजर साइंटिस्ट हैं वो कौन से हैं, ह्यूगो डे व्रीज, है ना। what done by the ह्यूगो डे व्रीज, म्यूटेशन। कितनी बार तो बता चुकी हूँ, ह्यूगो डे व्रीज gave the concept of the mutation। अब जो चीज इन्होंने देखो, अब नेचुरल सिलेक्शन को हम किसी भी वे में डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे थे। द वन ऑफ द वेरी बेसिक थिंग अबाउट द जिराफ वाला कॉन्सेप्ट, लामार्क ने क्या बोला था कि अर्लियर द जिराफ वाज द शॉर्टेस्ट, ठीक है, चलो ठीक है, दैट इज आल्सो ट्रू कि जब हम लोग प्लांट किंगडम का एवोल्यूशन पढ़ते हैं, सो वी टॉक लाइक दैट, पहले आपका एलिगी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, देन कम टू द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी जब हम लोग पहले बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द ग्रासेस एंड श्रब्स एंड हर्ब्स एंड श्रब्स एंड द टॉलर ट्रीज, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्लांट्स आर द मेन रिसोर्स, और आपके जो जिराफ थे, दे वर यूज्ड टू हैव फर्स्ट दिस, देन एज इट इज चेंजिंग लाइक दैट, एंड उन्होंने बोला कि अगेन यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, तो वो लंबी गर्दन इसलिए ट्रांसफर हुई क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस, ये तो जस्टिफाइड था, बट वाई डोंट डिस्कार्ड। बट इसी बात को डार्विन ने क्या बोला कि नहीं, द जिराफ वाज बोथ द शॉर्ट गर्दन, द शॉर्ट नेक एंड द लॉन्ग नेक, नेचर हैज सेलेक्टेड दैट लॉन्ग नेक, है ना। he didn't talk about that, he simply talk about something called the genetic drift, something called something like that। फिर पोस्ट डार्विनिज्म जो कि इसका ह्यूगो डे व्रीज वाज अ स्टूडेंट ऑफ द डार्विन, ठीक है। इसी तरह लामार्क ने जिस ईयर में बुक पब्लिश करी थी, ह्यूगो डे व्रीज उस साल उनका बर्थ हुआ था। इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशन। अब इन्होंने, अब इनके पास देखो नेचुरल सिलेक्शन तो हमें पहले पता चल गया कि ठीक है, यू हैव सो मेनी थिंग्स एंड यू आर गोइंग टू सिलेक्ट बाय द नेचर, देन फाइनली नेचर विल गोना बी डिसाइड दैट यू विल बी कंटिन्यूइंग और नॉट। इस बात के लिए इन्होंने जस्टिफिकेशन क्या दिया, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, बटरफ्लाई मॉथ वाला, है ना, उस बात के लिए इवन इन्होंने भी। अच्छा, आप लोग ये वाला जो डार्विन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, डार्विन फिंचेस, है ना, क्या आप लोगों को आइडिया डार्विन फिंचेस का नहीं है, चलो ठीक है, मतलब अभी तो फिर रहने देते। डार्विन फिंचेस का एक एग्जांपल ये, डार्विन फिंचेस पे सीधे सीधे क्वेश्चन आ रखा है। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन विद द हेल्प ऑफ दैट डार्विन फिंचेस और इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन द मॉथ। तो ये दोनों एग्जांपल आपको एकदम जस्टिफाइड होने चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल मॉथ का तो एग्जांपल पता होगा, आइडिया इंडस्ट्रियल मॉथ का नहीं, एग्जैक्टली दैट इज इट। देखो नेचुरल सिलेक्शन के ये दोनों एग्जांपल है, एक छोटा सा मैं डिफाइन कर देती हूँ। इंडस्ट्रियल मॉथ वाला एग्जांपल क्या है कि इनिशियली में ऑफ कोर्स वी नो दैट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ है, श्रीराम कब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, नहीं आइडिया शिवम, ऑन एन एवरेज सेंचुरी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटिश कब से, 1600 में तो इंडिया में आ गई थी ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का मल्टीपल रीजन था, सिर्फ एक एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, उनको चाहिए था, क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी है, हिस्ट्री इज कनेक्टेड विद द साइंस। देखो सिंपल था कि पहले के टाइम पे सारे काम जो होते थे वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते थे, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता था, है ना, इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती, तो जितना लोग, मतलब इन शॉर्ट इट्स अ बेसिक ऐसे का टॉपिक कि जितना आप बना रहे हो उतना आप कंज्यूम कर रहे हो, आपको जरूरत ही नहीं है इनकम की, है ना। बेसिक इकोनॉमी यही होती है कि वॉट एवर यू आर फॉर्मिंग यू आर कंज्यूमिंग इट, दैट्स इट। बट जब क्राइसिस होने शुरू हुए तब हमें ये लगना शुरू हुआ
कि जब क्राइसिस, जैसे कि गांधीयन इकोनॉमी, जब लोग इकोनॉमी कवर करते हो तो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द गांधीयन इकोनॉमी, कैसा करो, सब लोग अपना अपना बनाओ और सब लोग अपना अपना खाओ, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। गांधी की में प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने बोला कि ठीक है, क्या जरूरत है एक्सेस में रखने की, कोई बात नहीं, नहीं रखते एक्सेस, वो इंसान को प्रॉब्लम कर देगा, कि लालची काइंड ऑफ बना देगा, ठीक है। व्हाट हैपेंड व्हेन द क्राइसिस विल कम, अब कोई भी तरह की क्राइसिस आएगी, आपके पास रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, देन ईदर यू विल डाई और यू विल गो टू समवन एल्स हु हैव द एक्सेस ऑफ थिंग्स, है ना, ये तो होगा। तो फिर इस समय पे ये देखा गया कि अच्छा, या तो वो डाई कर जाएगा, Shall I am in the class? Anything important? 5:20 पे लगा, कल मॉर्निंग में लगा दो, कल मॉर्निंग में, आज मुझे तुषार सर की, आज मुझे सर की, अच्छा लगा दो 5:20 पे लगा दो, ठीक है। यस, तो सिंपल, जब क्राइसिस हुई तो ये देखा गया कि जिनके पास चीजें एक्सेस में है, ठीक है, पीपल आर गोइंग टू देम ऑब्वियसली। इस तरीके से इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन शुरू हुआ कि भाई आपको एक्सेस में बनानी है तो चीजें हैंडमेड नहीं होनी चाहिए, और डिस्कवरी, साइंस, समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो जब 1600 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी यहाँ पर आ गई थी, तो मेजर रीजन उनका क्या था, मतलब एक तो ये था कि उन्होंने अब चीजें एक्सेस में बनानी शुरू कर दी थी। अभी आप धीरे धीरे वन बास्केट बना रहे हो, तो ऑफकोर्स इट विल टेक द टाइम। When you are making such kind of product with the industries, it will not take the time and you require good amount of raw resources, ठीक है। तो पहला रीजन ये था कि रॉ मटेरियल के इंडिया में बहुत, इंडिया ऑलवेज एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। अच्छा ठीक है, अब जब आपने इतने सारे प्रोडक्ट बना लिए हैं, अब अपनी कॉस्ट तो निकालोगे, अब आप कॉस्ट कहां से निकालोगे, आपको क्या चाहिए, है ना। तो इंडिया हैड बोथ, India has a raw material too and India had the market too. So they came to the India and they said कि इंडिया को जो म्यूसली क्लॉथिंग होता है वो इतना सॉफ्ट होता था कि लोग कहते थे कि एक रिंग में से पूरी की पूरी साड़ी निकल आती थी, दैट वाज टू दैट मच सॉफ्ट, ठीक है। अब मटेरियल तो पहले ही से जाता था, जैसे आप लोगों ने सुना होगा नील की खेती, है ना, इंडिगो रिवोल्यूशन। तो जो इंडिया का रिवोल्यूशन, इंडिगो जो क्रॉपिंग होती थी वो बहुत अच्छी थी, तो वेरी प्योर, वेरी गुड कलर। बट इंडिगो की प्रॉब्लम में ये थी कि इनका जो ये था लैंड वो खराब कर दी, ठीक है। अब उन लोग ने, अब इंडिया ने तो बोला कि ठीक है, तो उन्होंने इस जगह पे कुछ नया डिस्कवर करा, उन्होंने बोला ठीक है, वी डू नॉट रिक्वायर द नेचुरल कलर, वी विल फॉर्म दैट सम आर्टिफिशियल, ठीक है। ऐसे ऐसे करके इंडियन रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो अब बस इंडियन रिवोल्यूशन से इतना ही रिलेशन था। सो उसी सेंचुरी में क्या हुआ, तो पहले जब कोई पोल्यूशन नहीं था, जैसे कि दिल्ली सल्तनत, इतना तो हिस्ट्री बैकग्राउंड सबको आइडिया होगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में देयर वाज नॉट अ हिस्ट्री और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो जो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने लगा तो आपने क्या किया, कोल बर्न करना शुरू करा, है ना। आपने उसके बाद क्या किया, मतलब पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल सबको बर्न करना शुरू किया। ऑफ कोर्स आपके एनवायरनमेंट में क्या हो गया, पोल्यूशन। अच्छा, वेरी शॉर्ट ट्रांसफॉर्मेशन इफ यू सी, जो पुरानी टाइम की बॉलीवुड मूवीज होती थी इन अ वेरी ऑब्वियस मैनर, उसमें जो कोई भी सॉन्ग्स होते थे वो कहाँ पे होते थे, फुल ऑफ गार्डन, लाइक अमिताभ बच्चन एंड लॉन्ग, लाइक, है ना, फुल ऑफ गार्डन, सो मेनी कलर। बट अभी के टाइम पे आप इतना नेचुरल कलर आप देख पाते हो, राष्ट्रपति भवन में गार्डन जब लगता है, जब वो प्रॉपर तो ओपन होता है कि भाई आप लोग और फूल देख लो, दैट मीन्स दिस इज सो रेयर, ओके फाइन। तो जब पोल्यूशन नहीं था, तो अभी आप, अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि आप लोग ने रियल में कितनी कलर्ड की बटरफ्लाईज देखी है, तो आपके पास कितने कलर होंगे, मैक्स टू मैक्स येलो, ब्राइट येलो, या फिर ब्राउनिश, या फिर येलो ब्राउनिश विद अ पैच्ड थिंग। हैव यू एवर सीन रेड कलर ऑफ बटरफ्लाई? यस, रेड विंग्स, बट इट्स वेरी रेयर, है ना। दिल्ली में तो आपको नहीं देखने को मिलेगी, आई एम श्योर दिल्ली में नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको रेड कलर की बटरफ्लाई देखने को मिलेगी, योर आईज कैन कैच इट वेरी इजिली, इट्स अ वेरी ब्राइट कलर, वेरी ब्यूटीफुल कलर, ठीक है। यही नेचुरल सिलेक्शन है। तो क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण जो बार्क्स होते थे या जो ट्रीज होते थे, अब ये पहले बहुत अच्छे से कलर के होते थे, तो धीरे धीरे पोल्यूशन के कारण इन पे पोल्यूशन की एक लेयर जमने लग गई थी, ठीक है। पोल्यूशन के कारण ये एक लेयर जम, तो जो ब्राइट कलर की बटरफ्लाईज होती थी, दैट वाज योर रेड कलर, येलो कलर, समथिंग लाइक वेरी ब्राइट कलर। एंड यू नो दैट कि बटरफ्लाईज इज अ वेरी गुड फूड फॉर देयर प्रेडेटर्स, है ना, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती है। तो जो रेड कलर की बटरफ्लाईज होती थी वो जल्दी प्रेडेटर की नजरों में आ जाती थी और वो ज्यादा उस पर फीड कर पाते थे। क्योंकि पहले क्यों, अभी अचानक से क्यों बढ़ गया, क्योंकि पहले द थिंग्स वर वेरी गुड, वेरी ब्राइट, सो मेनी रेड कलर ऑफ फ्लावर, समथिंग लाइक दैट। बट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण हमारे नेचर पे इम्पैक्ट पड़ा, है ना। तो उसके कारण अब जो बटरफ्लाई थी, उन्होंने क्या देखा
मतलब आपस में नेचर हैज सेलेक्टेड दैट। तो यहाँ पे दो चीज पैटर्न हो यहाँ पे, इसीलिए आपका वैसे तो मिमिक्री वाला जो टॉपिक है वो इथियोलॉजी में आता है, दोनों जगह ही आपका पूछा गया, इथियोलॉजी एनिमल बिहेवियर पेपर 1। तो मिमिक्री वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें भी पूछा जाता है, और मिमिक्री का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पेपर 2 में भी पूछा जाता है, बिकॉज ये आपका एवोल्यूशन से रिलेटेड। यही वाला टॉपिक आप मिमिक्री में सबसे पहले देते हो। वैसे तो 3 टाइप ऑफ मिमिक्री होती है, विल कवर अबाउट इट। तो जो रेड कलर की बटरफ्लाईज थी, अब वो सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया तो वो जल्दी हाईलाइट हो जाती थी, इनके प्रेडेटर्स होते थे, दे कैन फीड देम इजीली। तो और जो ब्राउनिश कलर की बटरफ्लाईज थी, अगेन द नेचुरल सिलेक्शन, इनिशियली वर बोथ रेड कलर की भी थी और ब्राउन कलर की भी थी। तो धीरे धीरे ये देखा गया कि इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन के बाद ब्राउन कलर की स्पीसीज इट्स अ वेरी लार्ज इन नंबर, अभी भी है, बट रेड कलर की स्पीसीज आर नॉट एनफ इन नंबर, बिकॉज वो इतनी जितनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है बेबीज, उससे जल्दी उनको प्रेडेटर खा पा रहे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्मॉलर ऑर्गेनिज्म एंड बिगर ऑर्गेनिज्म। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सो एनिमल को क्या चाहिए, फूड एंड रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल के लिए यही दोनों चीज चाहिए, दैट इज द एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। तो आप ये चीज सीखोगे, जो आपके स्मॉलर एनिमल्स होते हैं वो पहले अपनी एनर्जी किस में इन्वेस्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन में, है ना, बिकॉज उनकी लाइफ ही 1 to 2 days है ना। देखो इतना छोटू सा मस्कीटो और एक बार में 100,000 ऑफ एग्स देता है, ठीक है, सो दैट इज एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। तो ये तो इनके पास तो वो भी टाइम नहीं बच रहा। और जो बिगर एनिमल्स होते हैं, दे फर्स्ट डू दैट बॉडी ग्रोथ बाय इन्वेस्टिंग देयर चैनलाइजिंग एनर्जी देयर, देन दे इन्वेस्ट देयर एनर्जी इन द रिप्रोडक्शन, ठीक है, प्यूबर्टी वाला जो भी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे दैट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इसको ही हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। दैट मीन्स नेचर हैज सेलेक्टेड द ब्राउन कलर। अब आपने रीजन नहीं बताया, बट यू सिंपली सेड दैट नेचर हैज सेलेक्टेड दैट, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन। फिर यहाँ पे एक मिमिक्री का कॉन्सेप्ट ऐसे कैसे करोगे, धीरे धीरे क्या हुआ, रेड कलर की जो बटरफ्लाईज थी, दे स्टार्टेड चेंजिंग और मिमिकिंग इन द कलर of that particular species which are not easy to capture and can easily hide in their surrounding environment, ठीक है। तो आपकी जो मिमिक्री होती है वो 3 टाइप्स की होती है। जैसे कि अगर आप कभी गांव वाले के एरिया में जाओगे तो वहां पे देयर इज अ प्लांट, ग्रीनिश प्लांट, वो कभी भी काउज नहीं खाती है उसको, वो हल्के से स्पाइनी से, बहुत स्लाइटली स्पाइनिस होते हैं। और उनमें अच्छा कभी वाला जो है धतूरा का जो प्लांट है, कभी खाते हुए देखा गाय को, नहीं खाते देखा ना। तो 3 तरह की 3 टाइप्स ऑफ मिमिक्री इज देयर। एक होता है कि रिजेम्बलेंस ऑफ कलर with some kind of that particular organism which is harmful or bad in taste, ठीक है, bad in taste, hiding with the surrounding and creating the similar voice। 3 टाइप्स ऑफ मिमिक्री, एक तो कलर के साथ मिमिक्री, एक तो टेस्ट के साथ मिमिक्री, और एक वॉइस के साथ मिमिक्री, दैट्स द 3 टाइप ऑफ, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया, रेड कलर की जो बटरफ्लाई थी, दे कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द ब्राउन कलर एंड नाउ द पॉपुलेशन इज आल्सो सेम, ठीक है। यहाँ पे हमें मिमिक्री और नेचुरल सिलेक्शन का दोनों का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये बताया नहीं डार्विन ने कि क्यों हो रहा है रेड कलर से ब्राउन कलर, ब्राउन कलर से एनी अदर कलर, दैट वाज एक्सप्लेन। बट इनका जो थ्योरी था वो कोई भी डिस्कार्ड नहीं कर पाया। यस, नेचर फाइनली विल गोना बी सेलेक्टिंग दैट। तो फिर पोस्ट डार्विनिज्म में क्या हमने बात करी, दैट समथिंग इन दैट म्यूटेशन क्या है, एनी काइंड ऑफ चेंज, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी द नेगेटिव टू। दैट मीन्स यहाँ पे हमने बात करी कि इनका अब ये जो कलरिंग है वो क्या है, एक क्या है, पिगमेंटेशन है। पिगमेंट इज अ प्रोटीन, प्रोटीन इज अ डीएनए, ये तो रिलेशन है। अल्टीमेटली जो ह्यूमन में भी मेलानिन है, दैट इज अ प्रोटीन, पिगमेंटेशन प्रोटीन। तो फिर और हमने कल हमने देख ही लिया था कि जब स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट करा था तो मेनली क्या था, हमारे पास प्रोटीन ही बना था, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए में कुछ चेंज हुआ एंड दैट कॉल्ड द म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन इज अ कॉज ऑफ ऑल दिस नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन के मल्टीपल फैक्टर है, जेनेटिक डाइवर्सिटी या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच इज मोर सुटेबल फॉर सर्वाइविंग इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, समथिंग लाइक दैट। समझ आ गया। तो डार्विन का कोई कॉन्सेप्ट डिस्कार्ड नहीं कर पाया था, और जो पोस्ट डार्विनिज्म भी आया उसने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं बताया, उसने सिंपल उस नेचुरल सिलेक्शन का रीजन दिया, ठीक है। दैट इज व्हाई द डिवाइडेड। एक बार आईएफएस का क्वेश्चन आ चुका है ये आपका, that why that evolution of the history is divided with regard to the Darwinism। तो आप उसको डिस्कार्ड करते हो कि हम लोग जो प्री डार्विनिज्म है उसमें तो लामार्क है, तब तो डार्विन पैदा भी नहीं हुए थे, तभी भी उसको प्री डार्विनिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि डार्विन हैज गिव सम काइंड ऑफ थ्योरी व्हिच इज नॉन डिस्कार्डेड। गॉट इट।
इसी तरीके से आपका फिंचर वाला भी एग्जाम्पल है। अब अगर सपोज है, इतना समझ आ गया, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो ऐसे ही पूछते हैं। हम सारी चीजें अपनी कॉपी में नहीं रखते, बट व्हेन वी डिस्कस वी काइंड ऑफ नो द टॉपिक। चलो, theory of catastrophism and sudden creation from that inorganic matter. According to George Cuvier, according to George Cuvier, 1769 to 1832 इनका टाइम पीरियड है। The greatest supporter of this theory, कैटास्ट्रोफिज्म की थ्योरी इन्होंने सपोर्ट करी थी। वैसे तो आपके सिलेबस में कहीं भी ये मेंशन नहीं है व्हाट इज द एविडेंस ऑफ द डायरेक्ट एवोल्यूशन एंड व्हाट इज द एविडेंस ऑफ द इनडायरेक्ट एवोल्यूशन, ठीक है। बट आपका पैलेंटियोलॉजिकल स्टडीज पे पैलेंटियोलॉजिकल करके व्हाट इज द थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन, राइट द सपोर्ट इन विद रिगार्ड टू द पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस। इस पे व्हाट इज पैलेंटियोलॉजी, व्हाट इज आर्कियोलॉजी, व्हाट इज जियोलॉजी, हाँ स्टडी ऑफ अर्थ। तो कैन वी सी दैट जियोलॉजी एंड एवोल्यूशन विल रिलेट समहाउ इन द फ्यूचर, ठीक है। चलो, तो यस आई वाज सेइंग कि बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस पे आपका क्वेश्चन है दैट व्हाट आर द डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ द एवोल्यूशन एंड व्हाट आर द इनडायरेक्ट एविडेंस। क्या है डायरेक्ट एविडेंसेस जिसको आपको सीधी सीधी पता चल सकता है कि एवोल्यूशन ऐसे हुआ है? फॉसिल फ्यूल, सॉरी फॉसिल्स। Direct evidence, we can see that something in the DNA, we cannot see that is indirectly. This is the question, right now. And the father of modern paleontology, and the father of modern paleontology, comma, said catastrophe on the surface of Earth, catastrophe on the surface of Earth from time to time occurs from time to time due to which all life existing at the moment disappeared completely, and then life is created suddenly, from inorganic substances left on the surface of Earth. Next point पे लिखो Ernest Haeckel. H-A-E-C-K-E-L. Ernest Haeckel in 1866 expressed almost similar view in mechanistic theory. Next theory, कितनी थ्योरी हो गई? फोर्थ या फिफ्थ होगी ना ये? कॉस्मोजॉइक थ्योरी। नेक्स्ट इज फोर्थ या फिफ्थ होगी आई थिंक ये।
वो एक्सपेरिमेंट है, वो कीमियोस्मोटिक सिंथेटिक थ्योरी का है। राइट डाउन कॉस्मोजॉइक थ्योरी। According to this theory, Earth got the seeds of life. Earth got the seeds of life from space, and other planets, along with meteoroids, meteoroids होता है ना, along with meteoroids. This means meteoroid. This means life has not been originated. That means life has not been originated on the earth. Full stop. Sorry, comma. Not been originated from the earth, but came from another celestial body. Cosmos word मतलब यही होता है ना? That's full stop. This theory was developed by Richter in 1864 and supported by Helmholtz. That is called extraterrestrial life theory. Next point. Arrhenius का कॉन्सेप्ट आप लोग उसमें पढ़ते हो ना, एथिक्स में, भूल गए? Arrhenius in 1908. अच्छा, आपका तो कंप्लीट नहीं हुआ. Arrhenius in 1908 said about cosmic, इसको बोलते हैं panspermia theory या hypothesis, not theory, hypothesis, which suggested that spores of life have spread from one planet to other along with cosmic dust. Next point लिखो. Three popular variation of panspermia hypothesis are. अच्छा, इस थ्योरी को अगर आपको डिस्कार्ड करना हो, आप कैसे डिस्कार्ड करोगे? Obviously that is not accepting one, right? कैसे डिस्कार्ड करोगे? So what this theory is saying, Jamshid? ये थ्योरी क्या कह रही है? The cosmozoic or the cosmic or the panspermia theory, what it's saying? Are you supporting it? Never. How you will discard about it? कैसे डिस्कार्ड करोगे इस थ्योरी को? गुड. यस, एक प्लैनेट से दूसरी प्लैनेट जा रही है, ऑरिजिन किस प्लैनेट पे हो रही है? ठीक है, फर्स्ट लिथोपैन्सपर्मिया ब्रैकेट में
इंटरस्टीलर पैंसपर्मिया, ब्रैकेट में इंटरस्टीलर पैंसपर्मिया। दूसरी, सेकंड, मतलब लिथो मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, सिंपल इसका मतलब। दूसरी, बैलिस्टिक पैंसपर्मिया। सेकंड, बैलिस्टिक पैंसपर्मिया, बैलिस्टिक पैंसपर्मिया, ब्रैकेट में लिखो। इंटरप्लैनेटरी पैंसपर्मिया, फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट, ब्रैकेट में इंटरप्लैनेटरी पैंसपर्मिया। एंड थर्ड, डायरेक्टेड पैंसपर्मिया, डायरेक्ट पैंसपर्मिया। ठीक है, नाउ मेक द हेडिंग मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। Now make the heading modern theories of evolution. First, naturalistic theory. First, naturalistic theory. Naturalistic theory. You know, modern. It's a modern and most accepted theory. It's a modern and most accepted theory, which holds, which holds physiochemical evolution, physiochemical evolution occurred on the primitive Earth, occurred on the primitive Earth, during which simple inorganic substances, during which simple inorganic substances gradually evolved, simple inorganic substances gradually evolved into complex organic molecule, into complex organic molecule, and finally forming, and finally into complex organic molecules, and finally forming the protoplast, and finally forming the protoplasm. Protoplasm. Full stop. Next point. This theory was explained by Russian scientist AI operant in 1924 and Haldane in 1928. अलग अलग प्रूफ करी थी. And published a book titled, सबसे बेस्ट टाइटल क्या हो सकता है इस बुक का? अब ये भी हम तो नहीं सोचेंगे, नहीं. ऑरिजिन ऑफ लाइफ. यूपीएससी पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, इसलिए सोचना पड़ सकता है प्रीलिम्स में. ऑरिजिन ऑफ लाइफ. और सबसे पहले एक पता है आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा अगर आप लोग नॉन बायो बैकग्राउंड की हो? डार्विन ने दी होगी, है ना. ऑरिजिन ऑफ लाइफ in 1936. नेक्स्ट राइट डाउन. ओपेरेंट थ्योरी. नेक्स्ट मेक द हेडिंग ओपेरेंट थ्योरी. The earth came in existence. Operant theory. The earth came in existence around 5 billion years ago. Around 5 billion years ago. At that time,
It was very hot and molten. It was very hot and molten. अच्छा देखो, किसी भी चीज को जब आपको बनाना होगा ना, तो भी आपको टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, और किसी चीज को आपको डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा तो भी आपको टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, है ना. सपोज दैट what is sun, या what is earth, या what is Venus, या what is Mercury, या what is Mars, what it is? It is a combination of the dust particles. यही तो है, सिंपल. अब ये सारी जो डस्ट पार्टिकल है, सपोज दैट अब इनको कंबाइन भी करना होगा तो भी आपको क्या चाहिए, टेम्परेचर. तो जब कंबाइन करोगे, वैसे तो मैकेनिकल इज अ नॉर्मल थिंग, अब वहां पे मैकेनिकल फोर्स तो कौन ही लगाएगा एक्सेप्ट द बिग बैंग थ्योरी. तो जब ये सारा जो ऐसे प्रॉपरली, कुछ तो बिग बैंग हुआ, कुछ तो ब्लास्ट हुआ, सो मेनी पार्टिकल्स एंड डस्ट वाज लाइक मूविंग, रोमिंग हियर एंड देयर इन द यूनिवर्स, तो फील ये हुआ कि सारे पार्टिकल्स एक राउंड, बिकॉज राउंड इज द बेस्ट शेप, triangle, like triangle या square, that cannot be best shape to rotate continuously, right? तो ये सारी चीजें क्या हुई, एक रोटेट 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 में होके होते 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 क्या बन गई, ये हो रही है रोटेट. दैट इज गुड, दैट इज बिकॉज ऑफ समथिंग ग्रेविटेशनल पावर, सो दैट सो मेनी पार्टिकल्स कम टुगेदर. बट how they combining and coming to form the solid planet, that is because of the temperature. इसीलिए एक बार बहुत पहले, अभी नहीं, मतलब 2015 का पहले का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था लाइक व्हाट फोर्स इनटेक्स, अभी अपना नहीं है, जूलॉजी का नहीं है, ज्योग्राफी ऑप्शनल का है, कि व्हाट इज द वन फोर्स, क्यों था टेम्परेचर इतना हाई, जरूरत क्या थी, क्योंकि अगर टेम्परेचर लो होता तो डू यू रियली थिंक कि आपके जो डस्ट पार्टिकल्स है वो कंबाइन हो पाते, नहीं. ठीक है. और आप कोई भी चीज, इवन मैं सपोज दैट कि बहुत अगर ठंडा भी है, still if I'll even put the mechanical pressure to, still it will become heat. अगर आपके बॉडी में कुछ स्क्रैच लग जाता है या कहीं चोट लग जाती है, आप देखो आसपास की वहां पे चीजें गर्म सी हो जाती है ना बॉडी से. तो हीट या टेम्परेचर बिकमिंग हीट इज अ कॉमन फिनोमिना. कोई भी चीज आपकी बनेगी या बिगड़ेगी, सबसे पहले क्या होगा वहां पे, टेम्परेचर. ठीक है, रेड ऑफ. It was very hot and molten, hence there was no life on it. Hence there was no life on it. Next point form में लिखना. The suitable condition for life formation on the earth. The suitable condition for the life formation on the earth appeared around 3 billion years ago. 3 billion years ago. Next point. Before the origin of life, atmosphere consisted hydrogen, nitrogen, methane, ammonia and water vapor. H2, N2, CH4, NH3 and water vapor. H2O नहीं लिखना. Consisting hydrogen, nitrogen, methane, ammonia, ये भी लिख सकते हो, बट वाटर वेपर को कभी H2O मत लिखना, बिकॉज H2O इज सिंपल द वाटर. ठीक है, वाटर वेपर इतना लिख सकते हो, वाटर वेपर नहीं लिख सकते हो. हाँ गैस जी, चलो देख साइड ना, वाटर वेपर लिख लेना. देखो वाटर तो जो प्रेजेंट है ऑब्वियसली वो आपका मरीन फॉर्म में प्रेजेंट है इन द सेंस ऑफ द पैंजिया एंड द पेंथाल्सा, बट पेंथाल्सा इज आल्सो हैविंग सच काइंड ऑफ वाटर वेपर इज शोइंग, गैस नहीं हो सकती सिर्फ यहाँ पे जमशेद, क्योंकि वाटर वेपर इज शोइंग द काइंड ऑफ हॉट टेम्परेचर. जब स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट करा तो उस समय उसने वाटर वेपर थोड़ी रखी, उसने तो वाटर रखा है ना, वाटर वेपर तो नहीं रखा. फिर उसने क्या किया, इस पर्टिकुलर सिस्टम को 8000 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करा to create that water into water. That's what we need. Okay, ready on. Next point. The hydrogen atoms were numerous. अच्छा क्यों थे hydrogen atoms were numerous? क्या लगता है? Because the helium was the first element to form by the earth formation, which eventually led to the next element which was formed after helium was hydrogen. Yes, absolutely correct. हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट है भाई, सबसे पहले सबसे छोटी चीज बनेगी. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1.
Simple. Hydrogen atoms were numerous. Here, fusion reaction was also Very because good. of that there was abundance of hydrogen. Yes, because of that, exactly, because of the hydrogen was so much available, that is why initial environment, ये भी आपका क्वेश्चन है, that was in the, हमने कल लिखा भी था, that was in the reducing in nature. केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, हाइड्रोजन होता है तो रिडक्शन होता है, और ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, right? That's hydrogen were numerous, so the atmosphere was reducing in nature. The atmosphere were reducing in nature. Next, free oxygen was not present at the time of life origin. Free oxygen या अगर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं लिख रहे हो तो फ्री ऑक्सीजन के साथ ऐसे लिखना, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जैसे अभी प्रेजेंट है. फ्री ऑक्सीजन ब्रैकेट में O2, ब्रैकेट में राइट डाउन O2 was not present at the time of life of, or at the time of origin of life. Besides this, the earth crust contain, besides this, the earth crust, earth apostrophe s, crust contain the carbide and nitride, contain carbide and nitride, of various metals, So stop. The earth gradually cooled, comma, condensed, resulted in heavy rain, with thunder and lightning, It rained for thousands years with thunder and lightning. First stop, next point. It rained for thousands of years, which helped in the assimilation of the gases and minerals, of the earth's crust, and seawater converting into primeval soup-like substance. Primeval soup, S-O-U-P, soup-like substance. Next point. Simple substances like hydrogen, H2, ammonia, NH3, methane, etc. Like hydrogen, H2, NH3, CH4, methane, etc. Reacted to form monomers, like amino acids, glycerol, fatty acids, nitrogenous bases, etc. Next point, last. And the energy for the above reaction was provided by the UV lights, comma, cosmic rays, comma, lightning activities, and also from the volcano.
नेक्स्ट राइट डाउन, हेडिंग डालो, जे मिलर एक्सपेरिमेंट, जे मिलर एक्सपेरिमेंट स्लैश स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, जे मिलर स्लैश स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट। कभी कभी क्योंकि मिलर वाज द मेन वन हियर, कभी कभी सिर्फ मिलर एक्सपेरिमेंट भी लिखा होगा। अभी हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे तो उसमें लिखा होता है, तो वो भी वही है, ऐसा नहीं है कि स्टैनले मिलर को हटा दो, ठीक है। जे मिलर या स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, स्टैनले अलग थे, मिलर अलग थे। जैसे कि यहाँ पे ओपेरन वाज डिफरेंट एंड हार्डन वाज डिफरेंट, बट कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेरन एंड हार्डन। देखो जो आपका कीमियोसिंथेटिक कॉस्मेटिक वाली थ्योरी था, एक्चुअली इसका बेस प्रोवाइड करके दिया था ओपेरन एंड हार्डन ने, जो कि आपके रशियन साइंटिस्ट थे। बस इसको एक केमिकल लैब में जो प्रूव करा था वो स्टैनले मिलर ने करा था। So whenever you are talking about the Stanley Miller experiment, please give the references of the Operan and Hardy because he provided the base. ठीक है, कीमियोसिंथेटिक जो थ्योरी है वो इन्होंने ही दी थी, that comes in the modern theory. Obviously 1924 1928 में अगर कोई थ्योरी दे रहा that will be the modern. ठीक है, स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट के टाइम पे भी we have to mention that Operan Harden experiment. Just mention that, okay? Depending upon the number, suppose that अगर 10 मार्कर का है तो सिंपल मेंशन करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर थोड़ा सा 15 मार्कर का तो जस्ट गिव द रेफरेंसेस दैट दे प्रोवाइडेड द बेस ऑफ दैट कीमियोसिंथेटिक, दैट्स ओके। जे मिलर एक्सपेरिमेंट, स्टैनले मिलर in 1953 conducted Stanley Miller in 1953 conducted an experiment to support and verify the hypothesis proposed by Operan and Harden, underline। अभी इंट्रोडक्शन में जब भी साइंटिस्ट का नेम लिखोगे या किधर भी जस्ट अंडरलाइन दैट, Operan and Harden, which stated that life originated from simple inorganic substances. Life originated from simple inorganic substances which later formed organic compound. Next point. In this experiment, he tried to replicate the conditions. Present on the primitive Earth. That is reducing environment, lightening and mixture of gases. Pranav, what are the mixture of gases? CH4, CH3. CH3 is not a stable compound. Carbon always form the 4 bond. CH4 रहता है, CH3 अगर लिखोगे तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, CH3 नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट तो भूल गए, अमोनिया NH3 है ना, राइट डाउन, चारों कंपाउंड लिख लो, पांचों। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो फॉर दिस। अच्छा देखो कभी कभी ना स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट व्हाट वाज द अर्लीस्ट स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, लिखा रहेगा 10 मार्कर में जनरली देते हैं, 15 मार्कर में वो देंगे तो आपको लिखा रहेगा कि व्हाट वाज द अर्लीस्ट कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, तो आप हेडिंग डालोगे बॉडी में, ठीक है, अर्लीस्ट कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, और तब आप उसको थोड़ा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो आप इन सब के बारे में स्पेसिफिकेशन लिखोगे कि अगर हाइड्रोजन पाई जाती थी तो वो क्यों इतनी एक्सेस थी। बहुत नहीं करना है बट एटलीस्ट टू लाइंस ऑफ ईच। सपोज अगर मैं बोल रही हूँ अमोनिया है ना, अगर अमोनिया है, देखो N के साथ भी हाइड्रोजन है, C के साथ भी हाइड्रोजन है, N भी था, H2O भी था, लेकिन तभी भी हम NO2 नहीं लिखते हैं, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन जो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट था वो इसके साथ प्रेजेंट था, अलग से प्रेजेंट नहीं हो पा रहा था। सो सबके साथ आप क्या लगाते रहो, हाइड्रोजन लगाते हो, दैट वाज द रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। तो जो छोटे पॉइंट्स हैं इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करना होता है, ठीक है। अगर पूछा जा रहा है that what is the earliest
environment of the earth in which the life has been formed. ठीक है, write down. For this he proposed a setup. For this he prepared a setup which consisted of all the followings. First, boiling flask dash. It contained boiled water, comma, relating with old Earth's oceanic condition. Next, electrodes. Boiling flask के बाद electrodes dash produced electric current, comma, replicating the lightning events in the existed earlier environment. Replicating the lightning events that existed earlier environment. Next, flask of gases. Around. As oxygen was absent in the primitive Earth atmosphere, in the primitive Earth environment, therefore oxygen was not present even in the experiment too. Oxygen was not present full stop. It contained gases. Mainly अच्छा, वाटर वेपर का कोई परसेंटेज नहीं है वो तो, क्योंकि कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था ना, जितना आप टेम्परेचर देते जाओगे 8000 उसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट, condenser dash. It cooled down the mixture of gases. Creating the resemblance after precipitation. Next, higher temperature. Next, results obtained. The result obtained. After conducting the experiment, Miller obtained following. ये पॉइंट फॉर्म में हम लिख रहे हैं ना, ठीक है. Miller obtained following डैश करके लिखो. Formation of amino acids. ब्रैकेट में ग्लाइसिन, अलानिन, वेलाइन,
valine, etc. Valine, etc. Next, simple sugars. Simple sugars. Next, urea. Urea. Next, nitrogenous bases. Nitrogenous bases, etc. etc. Next, this experiment showed. क्या हुआ जमशेद? छूट रहा है कुछ? This experiment showed that life come from the organic molecules which arised from the inorganic substances present on the primitive earth. Present on the primitive earth. Give me a minute. Make this. Make this time. 12 हो रहे, 15 तक बना लेना है.
Done. ऑनलाइन हो गया? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। अब तक हो गया? Next, make the heading theories of evolution. Next, make the heading theories of evolution. अच्छा, आप लोग में क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, मतलब ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर, बट आई सिंपली वांट टू आस्क व्हाट आर द डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ द एवोल्यूशन। सपोज दैट अगर पूछा जाए तो ऑफ कोर्स वी हैव द डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द शायद फॉसिल्स। ठीक है, हमें दिख रहा है, मतलब डायरेक्ट मतलब हमें दिख रहा है। जैसे कि आपका जब ज्योग्राफी में आप अगर टॉपिक कवर करते हो तो हम लोग बोलते हैं व्हाट आर द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ द अर्थ इनसाइड ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अर्थ आपके डायरेक्टली बनी हुई है? तो एक क्या होता है आपका, यू आर डिगिंग इट, है ना, दैट इज अ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। आपको आता है यूपीपीसीएस सॉरी यूपीएससी के प्रिलिम्स में क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट आर द डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ द अर्थ एंड व्हाट आर द नॉट। जैसे कि मीटियोराइट, ठीक है, इज इट द डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ द अर्थ फॉर्मेशन और नॉट? ये क्वेश्चन आपका प्रिलिम्स का आप लोग देख सकते हो। मीटियोराइट जो भी हमारे होते हैं जो ऊपर से आते हैं, समथिंग लाइक दैट, इज द डायरेक्ट एविडेंस और द इनडायरेक्ट एविडेंस? वोल्केनो, अच्छा ऐसे बात करें, एक एक बात करते हैं। वोल्केनो इज द डायरेक्ट एविडेंस और द इनडायरेक्ट एविडेंस? डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि भाई वोल्केनो इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ, है ना। सो व्हाटएवर द मटेरियल आर प्रेजेंट इन द वोल्केनो that are also present in that earth only because it is coming from there. Okay. Earthquake, वो तो डायरेक्टली कुछ है भी नहीं, बट ठीक है, जो भी है डायरेक्ट है। ओके, digging of something, digging of the earth, that is that you can directly see that is forming like that, है ना। ये आपका प्रेम का क्वेश्चन है, 2020 के बाद का ही है, that is I'm also saying that, ठीक है। So similarly as which you can see directly, that is the direct evidences of the earth. So fossil fuels are the direct evidence of the earth, ठीक है। तो आपकी जो इवोल्यूशन का सिलेबस है उसमें एक सीधे सीधे मेंशन है, एक तो लॉ का सीधे सीधे मेंशन है, दैट इज हार्डी वीनबर्ग लॉ, एक तो प्रॉपर लॉ है। एक आपने कभी लॉ सुना, ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी? ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी सुना है कभी लॉ? ये एक लॉ है आपका इवोल्यूशन का, ये आपका डेवलपमेंटल फिजियोलॉजी में भी आता है, दोनों जगह ही ये मेंशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग उसको इवोल्यूशन में जनरली ट्राई करते हैं करने को, क्यों करते हैं? सो नाउ अकॉर्डिंग टू योर, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, what you can think of the indirect evidences of the evolution, human के evolution के indirect evidences क्या हो सकते हैं? गुड, वेरी नाइस, सिमिलैरिटी विद सम आवर ancestors। हम लोगों को लग तो रहा है कि ये दोनों चीजें हैं, रिजेम्बलेंस है, बट डायरेक्टली हम नहीं कह सकते, बट यस वी कैन से दैट। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसमें भी आप बाइफर्केशन कर सकते हो, which type of organs have the similarity, what is called homologous organ, सुना है ना, homologous, analogous and very very important the vestigial organ। what is the vestigial organ? आज तो पढ़ाया था श्रीराम। not used in that current world, है ना जमशेद, यही तो है vestigial organ। tell me the example। appendix, yes, good। Shali, Rohit, Manisha, tell me any other example of the, except that appendix, tell me any other example of the vestigial organ। yes, very good, wisdom tooth। और
विजडम टूथ तो इंसानों को भी बहुत काम है वैसे. अदर देन दैट, ओके, वट एवर द ऑर्गन्स आर देयर, सो मेनी ऑर्गन, टेल बोन हो गया आपका, विजडम टूथ हो गया, आपकी आई की जो पिंकिश कलर की लेयर होती है. सो अगर हमारी आई के सामने सपोज दैट कुछ आएगा तो वी क्लोज आवर आई विद द हेल्प ऑफ दैट आवर आई लैशेस. बट अब रेप्टाइल्स को देखोगे, स्नेक्स को देखोगे, तो दे डू नॉट कंटेन दैट आई लैशेस, है ना. उनके जब भी वो आंख, व्हेन दे आर क्लोजिंग देयर आईज और ओपनिंग देयर आईज, उनके ऊपर एक पिंकिश कलर की लेयर अप और डाउन. तो हमारी या नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड. So that is nectating membrane is also the vestigial organ. Or what can be the another indirect evidences of the evolution? Organs हो गए, comparative anatomy कह सकते हैं. और सोचो, यही पे हम लोग बात करते हैं. That is the ontogeny recapitulates the phylogenetic. I was just simply thinking कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो you have that kind of knowledge. चलो, write down theory of evolution. Theories of evolution. Write down evolution is among the most important concept of science. Theories of evolution. हाँ ठीक है, ये भी करेक्ट है. Evolution is one of the most important concept of science and is regarded as the unifying theory of science. Uniform theory of science. Next, evolution term is derived from the two Latin words E plus volvere. E plus volvere. E मतलब होता है from. E means होता है from. और volvere मतलब होता है to roll. Volvere means to roll. It means the act of unrolling or unfolding. It means the act of unrolling or unfolding, that is i.e. that is the doctrine according to which higher forms of life gradually arisen out of lower. This term was first used by Charles Bonnet. Double T एक ही. Charles Bonnet, comma, extrapolating from progressive embryogenesis, full stop. However, according to Savage,
according to Savage, Savage, in 1969. In 1969, the term evolution was first used by English philosopher Herbert Spencer. First used by English philosopher Herbert Spencer. Herbert Spencer. It's like live intros. Okay, next. Evolution has been defined. Why it is looking like that? Evolution has been defined as a gradual orderly change from one condition to another. Orderly change from one condition to another. Full stop. The principle of evolution implies that the development of entity in the course of time through a gradual sequences of changes changes comma from a simple to more complex state, from a simple to more complex state. Full stop. In other words, it maintains the different kinds of organism. It maintains the different kinds of organism simply with the result of differential survival. Underline that. Simply with the result of differential सर्वाइवल. इवोल्यूशन थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक जाएगा, ठीक है, इसीलिए बहुत जल्दी फिनिश करके इसको, इसीलिए पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस की कहां-कहां आपके फॉसिल मिले हैं, ये मिले, ये डिक्टेट नहीं करेंगे. दैट विल बी वेरी बोरिंग एंड दैट विल जस्ट अ फैक्चुअल नॉलेज. बोरिंग है इसलिए. तो वी विल वेरी सून हमने हार्डी वीनबर्ग लॉ करना है. नेचुरल सिलेक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना. वेरी क्विकली वी शिफ्ट. जमशेद, व्हाट हैपेंड? यू ओके? पक्का? अच्छा ठीक है. So we will shift to the very soon biochemistry in which we are going to talk about the protein and carbohydrate. ठीक है. अब मैं यही बताऊंगी बैठ के कि यहाँ पे ये वाला एविडेंस मिला है, वहां पे वो वाला एविडेंस. That is just remember to take. That is not something to concept. ठीक है. Head on next. Evolutionary theories. Various researches and scientists have given the theory of evolution which are classified according to specific time periods, as देख लो. First, pre-Darwinism, Darwinian and post-Darwinian theory.
post-Darwinian theory. First, make the heading: theories of inheritance of acquired character. Theories of inheritance of acquired character. देखो, वैसे तो हम लोग सीधे सीधे लैमार्क थ्योरी पे भी काम, वैसे सीधे सीधे हेडिंग डाल सकते हैं, दैट प्री डार्विनिज्म थ्योरी और लैमार्किज्म, है ना. बट क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते. व्हाट इज अ लैमार्क थ्योरी समथिंग. पहली बात तो ये आईएफएस का क्वेश्चन है, आईएफ में भी पूछा गया है. वो सीधे सीधे पूछेगा व्हाट इज द थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस कैरेक्टर एंड व्हाट वाज इट्स पोस्टुलेट्स. मतलब पोस्टुलेट्स मतलब हिंदी में होता है अवधारणा, मतलब व्हाट इज द कांसेप्ट बिहाइंड दैट एंड व्हाई इट वाज डिस्कार्डेड. तो हमने सीधे सीधे क्या लिखा है, दैट थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इट वाज गिवन बाय द लैमार्क. तो फिर उसके आगे बताएंगे व्हाट वाज द पोस्टुलेट्स एंड व्हाई इट वाज डिस्कार्डेड. चलेगा ना, ऐसे सीधे सीधे लिखने की जरूरत नहीं. ठीक है, नहीं समझ आएगा, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन. अगर नहीं समझ आएगा देन आस्क मी. I don't. Theories of acquired characters. It was given by Lamarck. It was given by Lamarck. Next point. He called the sentiments. He called the sentiment interior. Interior in which. Interior in which. He explained that. He explained that the characters acquired. The characters acquired through the uses of organs or new uses of them that were transmissible, that was inherited or transmissible, that was transmissible from the one generation to the next, from the one generation to the another or next. Full stop. However, the process of inheritance, was never clearly defined by him. In his next point, in his book, he explained his concept. Comma, named क्या नाम था इनकी बुक का नाम? Philosophy Zoologic. Named Philosophy Zoologic in 1809. नीचे लिखो postulates. Make the heading postulates. इन्होंने क्यों दिया था ये postulates? First, write down changing environment. As during early period of earth formation, as during early period of evolution, early period of evolution, the environment was not constant. It was in a continuous changes. Full stop. And as the environmental change, including its abiotic factor,
such as temperature, water, humidity, precipitation, pressure, temperature, water, humidity, precipitation, pressure, etc., etc. It impacted the organisms slash biotic component to change slash biotic component to change accordingly. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चेंजिंग इन्वायरमेंट के बाद इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ. इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ ये सब हेडिंग्स हैं, आपने जब पॉइंट लिखना है तो ऐसे सब हेडिंग की फॉर्म में लिखना है. ठीक है, इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ. नेक्स्ट, थ्रू चेंजिंग इन्वायरमेंट forces the changes in the internal usage of the organisms was also essential to carry out the changes which are suitable and helpful to exist and survive in the changing environment. Either temporary or permanent. Next point, subheading, use and disuse of organs. Next subheading, uses and disuses of organs. Various organs which played important role in survival become improved by continuous use and some organs reduced to vestigials and some organs reduced to vestigial organs with disuse or lack of uses. And finally, they become disappear because of less use slash importance in the body. While those organs which are in continuous uses become larger and larger. Those organs which are in continuous uses become larger. Full stop. This is called the acquired characters. As important in the survival and hence have the tendency to transfer to the next generation, because
these changes occurred because these changes occurred both externally and internally. Both externally and internally factors. Next, inheritance of, last point है, inheritance of acquired characters. Inheritance of acquired characters. देखो, such bodily modification, such bodily modifications in the form of acquired characters, in the form of acquired characters during the life are inherited in some manner and affect the future generation in some manner and affect the future generation through inherited pattern. यहाँ पे पॉइंट आपका खत्म हो जाता है, ठीक है. That what are the postulates of inheritance acquired character? So we have at least 4 points, right? 4 points है ना. ऐसे आप कोई भी थ्योरी लिखते हो, सपोज अगर हम नेचुरल सिलेक्शन लिख रहे हैं, तो आई डिक्टेट फर्स्ट नेचुरल सिलेक्शन में भी आपके ऐसे मल्टीपल पॉइंट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, मैक्सिमम रिप्रोडक्शन, बेटर सर्वाइवल, ठीक है. उसमें से नेचर क्या करेगी आपको, सपोज दैट किसी ऐसे एनिमल को नेचर ने चूज कर लिया, नेचुरल सिलेक्शन, रैंडम टेंडेंसी, ठीक है, नेचर ने क्या कर लिया, चूज कर लिया और बहुत अच्छा सर्वाइवल भी है. बट इफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव द एनफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, क्या इसका कोई बेनिफिट होगा? नहीं, राइट? बिकॉज वो तो सर्वाइवल ठीक है, बट इतना वो लार्ज, क्योंकि रिप्रोडक्शन इन इटसेल्फ इज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वेस्टमेंट. सो अगर आप सर्वाइव कर पा रहे हो, दैट्स गुड. बट इसीलिए जो आपके सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कौन से हैं? मैमल्स, राइट? मोस्ट ऑफ, और मैमल्स में भी आपके सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कौन से हैं? ह्यूमंस, ऑब्वियसली. तो ह्यूमंस के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है. एंड दैट सर्वाइवल इज आल्सो गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. जैसे कि मैमल का नाम ही मैमल क्यों है? बिकॉज वी हैव द मैमी और द मैमेलियन ग्लैंड्स. मैमेलियन ग्लैंड्स का सिंपल सिग्निफिकेंस इस तरीके से है, इवन सम ऑफ द एनिमल इन विच द मेल्स आल्सो हैव द मैमरी ग्लैंड्स, बिकॉज सिंपल they want to the better survival of the next generation. रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो ठीक है, बट उसके बाद भी अगर न्यू बॉर्न बेबी या न्यू बॉर्न किसी का भी नेक्स्ट जनरेशन है, अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, देन इट विल बी द प्रॉब्लम, ठीक है. नेक्स्ट राइट डाउन, एक नॉर्मल स्टैंजा लिखो और खत्म है ये. राइट डाउन, thus THUS, thus, हाँ, पॉइंट खत्म हो गए, इट्स स्टैंजा ओनली. thus inheritance was viewed by the lemma. Inheritance बताना पड़ेगा ना, क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं हम. Inheritance was viewed by the lemma simply as a direct transmission of those superficial body changes that arose within the lifetime of individuals. Full stop. Thus, after many generation, a newer species with new characters develop. अच्छा, सपोज अगर आपको इस थ्योरी को डिस्कार्ड करना हो, तो एक तो सिंपल हमने ये दे दिया, मतलब ऑलरेडी इट हैज बीन गिवन कि क्या कहते हैं कि जो ऑर्गन, जैसे कि सपोज जैसे कि रिसोर्सेज थे, उस पर हमारे एनिमल्स डिपेंडेंट थे. ऑब्वियसली वी नो दैट प्रोड्यूसर्स आर द प्लांट ओनली. सो मेनली रिसोर्स आपके किसी भी इन्वायरमेंट में क्या है? प्लांट्स है. तो आपने जिराफ को तो जस्टिफाई कर दिया.
अब इन्होंने बोला कि क्योंकि आपके प्लांट्स खत्म हो रहे थे, ग्रासेस खत्म हो रही थी, आपके टॉलर ट्रीज आ रहे थे। चलो ठीक है, आपने इकोलॉजिकल सक्सेशन में डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो एक बात बताओ कि अभी तो क्या कहते हैं, जिराफ ही क्यों, फिर सारे ही ऑर्गेनिज्म की गर्दन लंबी होनी चाहिए। Whoever the organism depending on that food resources as a vegetarian or on the plant bodies, उन सबकी ही नेक लंबी होनी चाहिए, है ना। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि अगर सब कुछ ही आप इस पे डिपेंडेंट कर रहे हो, तो हम लोग इवोल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, स्पीसिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीसिएशन? यस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज, है ना। जैसे कि अगर हम लोग किसी भी चीज की बात करें, अगर सिंपल यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन बिकॉज ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड बिकॉज ऑफ व्हाटएवर दे आर रिक्वायरिंग, व्हाटएवर दे आर डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज, तो स्पीसिएशन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। सभी लोगों की नेक लंबी होगी, सभी लोग विल लुक लाइक द सेम ओनली, है ना। एवरीवन हु इज लाइक बेंडिंग देयर नेक एंड फॉर द ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, तो सब में ही सिमिलर पैटर्न आएगा। तो इस इवोल्यूशन लेमार्क की थ्योरी ने अपने आप को भी जस्टिफाई नहीं कर पाया और स्पीसिएशन को भी जस्टिफाई नहीं कर पाया। कि जैसे कि सपोज दैट अगर हम बात करें कि व्हाई द नेक ऑफ द कैमल इज लॉन्ग व्हाइल दे आर लिविंग इन द डेजर्ट, बट द अनदर स्पीसीज ऑफ द कैमल इज द इलामा, उसकी नेक छोटी क्यों है? डिफाइन करो। दे आर डिपेंडिंग ऑन द सेम रिसोर्सेज, राइट। सो स्पीसिएशन ही कुडंट डिफाइंड और जस्टिफाइड वेरी इजीली, बट नेचुरल सिलेक्शन विल डिफाइन इट, है ना। पिक कर रही है उसको जहां जो, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन द वन फैक्टर दैट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, नेचुरल सिलेक्शन डिपेंडिंग ऑन सो मेनी फैक्टर्स, ठीक है। एग्जांपल ऑफ लेमार्किज्म, एग्जांपल ऑफ लेमार्किज्म, डैश डैश इवोल्यूशन ऑफ जिराफ, डैश इवोल्यूशन ऑफ जिराफ। डिफाइन कर लोगे? इतना तो सबको पता ही है, एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने, हो जाएगा। ऐसा करना है जैसे फुल पेज है अगर आपका, तो मैक्स टू मैक्स 10 to 12 लाइन में इसको डिफाइन कर लेना है। इनिशियली देयर वाज अ शॉर्ट नेक जिराफ, है ना, शॉर्ट नेक जिराफ, एंड साइमल्टेनियसली दैट एट दैट टाइम पे जो प्लांट होते थे दे वर आल्सो द ग्राउंडेड, है ना। So short neck giraffe was easy to dependent on that grounded grasses, तो उनकी नेक छोटी थी। धीरे धीरे आपको बस 2 पॉइंट ही मेंशन करना है कि प्लांट भी बड़े होते चले गए, द टॉल ट्री एंड द हाई कैनोपी ट्रीज, है ना। यहाँ से आपका सफर जो है वो हाई कैनोपी तक पहुंच गया। सो नाउ दिस बिकम इनएक्सेसिबल, है ना। अभी जिराफ को अपनी क्या करी, नेक ऊंची करनी पड़ी, कभी पूछा नहीं गया है, बट आपके नोट्स में होना चाहिए, इसलिए मुझे डिक्टेट करने का भी पड़ा। समझ आ गया? वही वाला कॉन्सेप्ट है कि डिपेंडिंग क्या हुआ, आपकी ट्रीज जो थे, रिसोर्सेज जो थे वो भी यहाँ पे हो गए। अच्छा ये बताओ, यहां से यहाँ का ट्रांसफर क्यों हो गया? हाँ, बट क्यों? इवोल्यूशन, बट व्हाई? इंटर कॉम्पिटिशन। यहाँ पे नहीं होगा इंटर कॉम्पिटिशन। हाँ, कैनोपी, बट एक अगर आप सपोज एक फॉरेस्ट एरिया देखते हो, जैसे कि इंडिया की जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है, तो सारे ही अगर कंपटीशन शिवम यहाँ पर है तो यहाँ पे तो कंपटीशन है, हर लेवल पे कंपटीशन है। अगर कोई एक ही चूज होना है तो इसमें भी कोई एक ही चूज हो, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक बोथ आर द कंपटीशन, नो। कंपटीशन तो इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर द नेचुरल सिलेक्शन, दैट कंपटीशन में जो भी बेटर होगा नेचर विल गोना सेलेक्ट दैट। तो अभी तो इन दोनों में कंपटीशन ज्यादा है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन विल बी मच मोर हायर देन द इंटर स्पेसिफिक ग्रासेस, और इसमें तो कंपटीशन किसमें ज्यादा है? ह्यूमन में कंपटीशन ज्यादा होगा कि ह्यूमन और मंकी में कंपटीशन ज्यादा है? ह्यूमन में। तो इसीलिए ये भी तो बताओ मुझे, ये क्यों हो रहा है? ठीक है, दैट्स व्हाट नॉट जस्टिफाइड। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल लिख लो, एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स, इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स, जहां पे आपने ये लिखा है जिराफ वाला, उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, राइट इन योर लैंग्वेज, एंड नहीं लिखोगे देन आई विल ऑफ कोर्स गिव सम काइंड ऑफ नोट्स। सेकंड लिखो इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स। क्या है इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स में? यस, डिसअपीयरेंस ऑफ लिंक्स। उसने बोला, इसको कैसे जस्टिफाई करा उन्होंने? सिंपल, लिसन दैट वेरी केयरफुली, दैट इनिशियली
जो आपके स्नेक्स थे वो क्या हुए, उनके पास लिम्स थे प्रॉपरली, ठीक है। बट बिकॉज द टेम्परेचर, हमें पता है कि जो रेप्टिलियन का पीरियड है दैट इज जुरासिक पीरियड और दैट इज अ मीसोजॉइक पीरियड, है ना। जब हम इवोल्यूशन को डिवाइड करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं मीसोजॉइक, सीनोजॉइक। सीनोजॉइक आपका करंट वाला पीरियड है। तो जो मीसोजॉइक पीरियड था एट दैट टाइम पे, दिस इज ट्रुथ कि टेम्परेचर वाज वेरी हाई, दैट इज व्हाई रेप्टाइलियंस, जो रेप्टिलियंस होते हैं उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो टेम्परेचर वाज वेरी हाई, तो अब जिन ऑर्गेनिज्म ने अपने स्केलरी डेवलप नहीं कर पाए, अब उनने कहाँ जाना शुरू किया, बरो बना के। ऑब्वियसली अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होता है ना, गर्मी में जब वो वाला पानी पीते हैं वो हल्का सा ठंडा मिलता है, राइट। तो जब ये ऐसे बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, बहुत दे वांटेड टू गो वेरी क्विकली, और बिकॉज वो थोड़े से क्रीपिंग एनिमल्स थे, तो जो बिग एनिमल्स थे दे बिकम अ वेरी इजी प्रे फॉर देम, सो दे वांटेड टू गो एंड हाइड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑन द आल्सो द प्रेडेटर फ्रॉम द। तो उनमें क्या हुआ, उनके जो लेग्स होते थे वो उनको हर्डल क्रिएट करते थे, तो ग्रेजुअली उनको लेग्स का कोई काम नहीं होने लगा, तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड दैट कैरेक्टर पर्टिकुलरली went for the next generation. While this is not correct. The correct reason was the mutation of the SXL gene. ये म्यूटेट हो गया था, पर एक टाइम पे ऐसा था कि कुछ में म्यूटेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट लेवल। जैसे कि अभी जो हमने इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म की बात करी, वहां पे भी इट स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट लेवल, ठीक है। एंड अगर वो बेटर होता है तो ये अलग अलग चीजों में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे हुआ एनिमल्स, स्नेक्स वर द बोथ, यहाँ पे लिम्ड वाले भी स्नेक्स थे और विदाउट लिम्ब वाले स्नेक थे, तो नेचर हैज सेलेक्टेड विद देम। रीजन वाज नॉट बैड अबाउट द लमार्क, लमार्क ने रीजन गलत नहीं दिया था, बट उसको जस्टिफाई नहीं करता, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स, ancestor of snakes were lizard like, ancestor of snakes were lizard like creature, ancestors of snakes were lizard like creature, creatures with elongated body, with elongated body and two pairs of limbs, and two pairs of limb, full stop, while escaping from enemy, while escaping from enemy and to avoid harsh temperature, and to avoid harsh temperature, they have to creep through holes or burrows in which the limbs become, in which the limbs became trouble, so they stopped using it and lost after many generations. So they stopped using it and lost after many generations. Next example, flatfishes slash deep sea fishes. Flatfishes and deep sea fishes. नेक्स्ट, डक्स एंड अदर एक्वेटिक बर्ड्स। देखो फ्लैट फिशेस उसमें क्या होता है, अगर आप बहुत डीप सी फिशेस को देखोगे तो ऑब्वियसली वो डीप सी है, उनको ऊपर आने की जरूरत नहीं है, तो ग्रेजुअली वो ऐसे कहीं ना कहीं दे लाइक लेस एक्टिव, दे बिकम ऑलमोस्ट इनएक्टिव। तो उनकी बॉडी का जो एक साइड का पोर्शन होता है, कभी हम लोग जब अभी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में लोग जब अर्थ का आई का इवोल्यूशन पढ़ेंगे देन विल कवर इट। सो ये वाली जो फिशेस होती है उनकी वन साइड ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स बिकम ऑलमोस्ट इनएक्टिव because they do not use it, बल्कि सही मतलब रीजन वही है, ठीक है। so that is the flat fishes or the deep sea fishes, ठीक है। write down critiques and objection of Lamarckism, critiques and objection of Lamarckism. First proposition, objections of Lamarckism. First proposition of Lamarck, first proposition of Lamarck that the tendency to increase in size of organ, the tendency to increase in size of organ in continuous use
in continuous use was criticized as in many cases continuous organ in many cases the organs in the continuous use in many cases the organs in the continuous use do not increase in many cases the organs in the continuous use do not increase. Example बताओ. आइस, ठीक है, और इंक्रीज होंगी तो कब तक होंगी? इतना इंक्रीज होना तो देयर शुड बी सम लिमिटिंग फैक्टर, नो? अदर देन दैट, जमशेद टेल मी द एग्जांपल. अच्छा, बर्ड से रिलेटेड है और बहुत ही सॉलिड एग्जांपल है. एग्जैक्टली जितनी भी इवन आपकी हैवी बर्ड्स होती है उनके बहुत अच्छे विंग्स होते हैं, है ना? तो अगर इतना ही यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स है तो सच एज पिकॉक, है ना, पिकॉक के तो इतने लंबे फेदर्स होते हैं बल्कि इतना कंटिन्यूअस यूज भी नहीं होता है, राइट? साइड डाउन, विंग्स स्लैश फेदर्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स स्लैश फेदर्स ऑफ बर्ड्स. नेक्स्ट, second principle of new organs development for new need is not true because then in similar environment in similar environmental condition all the different types of organism should be evolved in similar way. नेक्स्ट, जब हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि नहीं भाई जो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन है वो इन इट सेल्फ करेक्ट है कि भाई ये बात सच है, ठीक है? सो थर्ड लिख लो, थर्ड प्रिंसिपल दैट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन was meaningful when studied with the fourth principle. Last, the fourth and final principle was criticized. By various scientists. The fourth and final principle was criticized by various scientists as August Weismann, was the first person who gave definite distinction या definite difference between heritable and non-heritable changes. By his germplasm theory. ठीक है, समझ आ गया? अगर आप लोगों को और भी क्रिटिसिज्म लिखना है तो सीधे सीधे माइस का एग्जांपल या रेसलर बॉडी का एग्जांपल लिख सकते हो. अगर इससे ज्यादा मार्क्स में आएगा तो इट विल बी द फाइन. ठीक है, चलो नेक्स्ट एड ऑन.
theory of natural selection, Darwin theory, and make this star every single year. Natural selection पे क्वेश्चन पूछा गया है. अच्छा, लैमार्क की थ्योरी का कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा. सपोज दैट पूछ ही लिया गया सिग्निफिकेंस बताओ, तो क्या बताओगे? What is the significance of the Lamarckism theory? सोचो, कुछ तो करा होगा. कुछ नहीं भी करते हैं तभी भी कुछ तो अच्छा होता है उसमें. पीछे नहीं लिखा हुआ है शिवम. Ma'am, is it the indication of development of new characters? But that was discarded, no, Vaishali. The development of the new characters is discarded completely. That is why the natural selection. That is why the natural selection has been accepted. बहुत जल्दी आ गई. अच्छा. That is on the basis of that only the natural selection has been. सुनो, क्या नाम है? अब मुझे फ्री जाना तो बॉटल फिल कर दो. ठीक है. On the basis of that only the natural selection has been accepted, while this theory has been discarded. Right? Other than that. By which concept exactly? जिराफ वाला तो मतलब by which principle exactly? Use and disease of organs. है ना? That's truth. म्यूटेशन भी तभी हो रहा था. That's truth. कि म्यूटेशन इनकी जो बेसिक थ्योरी थी डिस्कार्ड करी गई थी. That was inheritance of acquired character. बट म्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट हम लगाते कहाँ? लिम्ब में ही क्यों हुआ म्यूटेशन? क्यों और कहीं म्यूटेशन नहीं हुआ? राइट. सो यूज एंड डिसयूज वाज द करेक्ट वन. इतना प्रॉब्लम था नहीं उसमें. ठीक है. और जब आप सिग्निफिकेंस देते हो ना तो थोड़ा सा ब्रॉडर डायमेंशन सोचते हो. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस, सिंपली टॉक कि इसने क्या किया. इवोल्यूशन की लैमार्क के पहले तो लोग बकवासी कर रहे थे, कुछ भी थ्योरी बता रहे थे. एटलीस्ट लैमार्क गिव द डायरेक्शन फॉर द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन एज इट हैज प्रिपेयर्ड फॉर द बेस, है ना, बाय सिंपली टेलिंग कि कुछ तो चेंज हो रहा है व्हिच इज क्रिएटिंग द न्यू स्पीसीज. वो जस्टिफाई नहीं कर पाया, दैट इज समथिंग डिफरेंट. उसमें आप सिंपली मेंशन कर सकते हो दैट इज द यूजर डिसीज ऑफ ऑर्डर. अगर लेमा का कॉन्सेप्ट आता है तो कंक्लूजन में आप इसकी सिग्निफिकेंस ही लिखोगे. सिग्निफिकेंस लिखने के साथ साथ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, ज्योग्राफी में आएगा तो ज्योग्राफी लिखना पड़ेगा यार. अगर बायो में आ रहा है, ये क्वेश्चन आया है, एवोल्यूशन में आया है, तो आप ये थ्योरी दो. तो फिर आप कुछ भी मेंशन करो. आप एरिस्टोटल मेंशन करो, आप लामार्क मेंशन करो, आप डार्विन मेंशन करो. बट इफ इट विल कम इनटू द यूपीएससी जीएस पेपर 1, देन लिमिट. क्योंकि पता है आपको एक बहुत बेसिक ट्रिक है ये, जो हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, क्लियर है, उनको पता है ये कि अगर आपकी नॉर्मल कॉपी में, जीएस कॉपी में अगर ये आ जाता है इन्फेक्शन की, ओके यू आर फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो आपने कितना भी अच्छा आंसर लिखा वो देगा एवरेज मार्क्स. ऐसा तो सारी सब्जेक्ट के पीछे बेनिफिट है. जैसे पीएसआई वाले वो पॉलिटी बहुत अच्छा लिख के आएंगे. लॉ वाले वो पॉलिटी के पेपर में ऐसे ऐसे केसेस डालेंगे, बट हम उतने अच्छे केसेस नहीं डाल पाएंगे. हमसे बोल दिया जाएगा ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लिखने को या पोल्यूशन लिखने को, हम लोग ऐसी ऐसी डिजीज लिख के आएंगे जो बेचारे खुद ही ना पता होंगे. इतना ज्यादा नहीं लिखना होता है. कड़क. यूपीएससी में ऑल और नन थ्योरी पे काम होता है, मैथ्स पे. इसीलिए जियोलॉजी में थोड़ा सा मार्क्स मिलता है, जबकि वो साइंस है. अल्टीमेटली अगर आपका फाइनल नंबर नहीं आया, फाइनल जो रिजल्ट, जो मॉडल आंसर उनके पास है, बिल्कुल मार्क्स नहीं. स्टेप मार्किंग नहीं होती यूपीएससी में. हाँ हाँ, फाइनल तो होता नहीं है ना. जो पैटर्न उन्होंने सोचा है, तो भाई यूपीएससी भी ऐसा हलवा पेपर नहीं बनाती है मैथ्स का. कितने लोग मैथ्स ऑप्शन लेते हैं? मैं अपने बता रही हूँ, जब मैंने आपका 22 में तो 2 स्टूडेंट थे, जब 23 में जब मैंने मेंस दिया था तो एक सेंटर में अराउंड 500 स्टूडेंट तो होते होंगे मेंस में. आई वाज द ओनली वन विद द जियोलॉजी. कोई और था ही नहीं, एक भी बच्चा नहीं था जियोलॉजी. क्योंकि जब आप, वैसे तो आपका सेंटर नॉर्मली होता है, जब आपका ऑप्शनल पेपर होता है जो कि गैप के बाद होता है, तो जो आगे बोर्ड शीट चिपकी होती है ना, उसमें आपका रोल नंबर लिखा होता है और यहाँ पे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखा होता है. क्योंकि रूम की जो पैटर्न चेंज होता है. कोई भी नहीं था, नॉट अ सिंगल वन. मेरे ही क्लास में बैठ के लोग कह रहे हैं जियोलॉजी वाला कौन है यार, ये बच्चा आएगा. लाइक आई एम देयर ओनली. ठीक है. एंथ्रो के थे, मेरे जस्ट पीछे केमिस्ट्री का शुरू था, और मुझे तो लग रहा था कि उन्होंने मुझे कहीं तो रैंडम डाल दिया.
क्योंकि जेट हाउ इट इज कमिंग बिटवीन ए एंड सी. इन माय क्लासरूम मेरे आगे में सारे एंथ्रो के थे और पीछे में केमिस्ट्री के थे. बी कुछ डालो ना, लाइक जेट कहाँ से आ रहा है? बॉटनी का तो मैंने ध्यान नहीं दिया है. हाँ, बी डालना था, उन्होंने जेट डाल दिया है. आई डोंट नो व्हाट इज इट. ठीक है, तो जमशेद उसमें पहली बात तो अपना है नहीं ऑप्शनल. हाँ, इसीलिए मैथ्स ऑप्शन में अगर जैसे कनिष्क कटारिया when he got a very good number. और there's a one thing, इसीलिए यूपीएससी ये सोच भी रही है कि सपोज दैट आप मैथ से हो, आप जियोलॉजी से हो और आपने हिस्ट्री ली, उन्होंने बोली है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे ना, तो भी एक नॉर्मलाइजेशन करा जाता है. इस बात पे साइंस वाले बच्चे एक स्टेप प्लस भी होते हैं और एक स्टेप माइनस भी होते हैं. ठीक है, इतना दिमाग में. आपने अच्छा आंसर लिख के आना है, जियोलॉजी ठीक ठाक मार्क्स दे देती है, वो दे गॉट 300 प्लस मार्क्स, और बहुत अच्छा आंसर मैं नहीं भी लिख के आई थी. विटामिन्स का आंसर तो मैंने बहुत ही घटिया लिखा था, आई विल रिमेम्बर दैट. बट कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए. दैट इज व्हाई आई गेट टू नो कि क्या मैंने इतना लिखा था विदाउट इवन इंस्टीट्यूट कोचिंग और समथिंग लाइक दैट, सो दैट आई गॉट द गुड मार्क्स. दैट इज द थिंग. आई हैव रिटन वेरी गुड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, प्रॉपर्ली डिफाइंड था. जैसे कि मेरे टाइम पे मुझे जीएस पेपर सेकंड में बहुत अच्छे मार्क्स मिले. तो जिसमें आपको थोड़ा सा फियर होता है ना, आप उसमें बहुत अच्छा लिख के आते हो. तो व्हेन यू हैव, एंड व्हाई आई एम फोकसिंग सो मच ऑन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, जब आप लोग एक्चुअली आंसर लिखोगे ना, आप लोगों को फील होगा कि क्वेश्चन तो पता है, स्टार्ट कहाँ से करना है ना. वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में था, भाई पहला शब्द बता दे, है ना, भाई पहला वर्ड बता, स्टार्ट किससे होता है, तो आपसे आपके बोलोगे द, है ना. So that is why it is just wasting your time too, and it is not good with the overall marking. अगर आपने इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छा लिखा है, मेरा गुड टू गो, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं. कितना ही वो नॉर्मलाइज करेगा, है ना. चलो बैठो, थोड़ी देते रहे. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड डार्विन थ्योरी. चार्ल्स डार्विन in 1859 solved the mystery of mechanism solved the mystery of mechanism by organic evolution. Hello, yes, हाँ हाँ काजू बोलो. अच्छा मैं ना, सुनो काजू, आई एम इन द क्लास, जस्ट कॉल मी आफ्टर 4 minutes, जस्ट एक सेकंड. Charles Darwin in 1859 solved the mystery of mechanism of organic evolution by proposing the theory of natural selection by proposing the theory of natural selection in his book origin of species. हाँ वही गैलापागोस आइसलैंड, वही तो मैंने पूछा था, डार्विन प्रिंसेस वाला. वो शिप लेके निकले थे, डार्विन अकेले नहीं निकले थे, डार्विन निकले थे और अल्फ्रेड वेलेस भी निकले थे, दोनों ही निकले थे साथ में. फिर वो घूमते घूमते पहुंच गए वो कैरिबियन, साउथ अमेरिका के सी साइड में. उन्होंने बोला अरे ऐसा कुछ चेंजेस, वही डार्विन प्रिंसेस चलेंगे अपन. ठीक है, राइट डाउन. चार्ल्स डार्विन and Alfred Russell Wallace. Charles Darwin and Alfred Russell Wallace spent many years in collecting and exploring South America and certain island of its sea independently. हाँ, एंड्रयू, एग्जैक्टली वही तो मैंने पूछा था, डार्विन प्रिंसेस गैलापागोस आइसलैंड. एंड्रयू, similar conclusion about the possible mechanism of organic evolution
of organic evolution due to natural selection. Due to natural selection. ठीक है, देखो मतलब हो गया अभी। डार्विन अपनी बुक में खुद कहते हैं दैट ही वाज एग्रीड विद द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। बस उन्होंने एक वर्ड को थोड़ा सा हटाया था लामार्क के कॉन्सेप्ट में, डायरेक्टेड वेरिएशन। देखो वर्ड इट इज समझ आया? लामार्क हैज सेड दिस एंड डार्विन हैज सेड। एक सीरीज में नहीं हो रहा है, रैंडम हो जाएगा, नेचर ने जिसको सेलेक्ट करेगा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सो मेनी फैक्टर दैट। बट लामार्क सॉरी डार्विन इन हिज बुक हैज हिमसेल्फ सेड दैट कि होता तो है ही ये। ठीक है, थैंक यू। हो गई, कल करेंगे अपन डार्विन का कॉन्सेप्ट नेचुरल सिलेक्शन।